There's been a massive development in the Delhi Liquorgate case. Delhi Chief Minister and AAP convener Arvind Kejriwal has now been asked by the Enforcement Directorate to appear before the agency on November 2nd in the Delhi excise policy case. Now, the financial watchdog has asked the Chief Minister to appear before it on November 2nd. Reacting to the summons issued to the Chief Minister, Aam Aadmi Party Minister Atishi has accused the central government of desperately trying to finish the Aam Aadmi Party. Further, it was added that BJP and Centre are leaving no stone unturned to imprison the Delhi Chief Minister. Now, the summons comes hours after the Supreme Court yesterday rejected the bail plea of former Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia. Earlier, Delhi Chief Minister was questioned by the Central Bureau of Investigation for over 9 hours on April 16. भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। दिल्ली और पंजाब में हो रहे हर काम से डर लगता है। फ्री बिजली से डर लगता है, अच्छे स्कूलों से डर लगता है, मोहल्ला क्लिनिक से डर लगता है। इसीलिए वो झूठे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है, पार्टी को खत्म करना चाहती है। इसी साजिश के तहत 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया है। उन पे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम उनके झूठे केसेस से नहीं डरते। हम देश के लोगों के लिए, देश के हर आम आदमी के लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना। और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे, किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, अब उनकी काली परतें खुलने लगी। जांच एजेंसी ने उन्हें सम्मन करके बुलाया। शराब नीति घोटाले में जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसके निमित्त आज माननीय न्यायालय ने भी मनीष सिसोदिया की बेल खारिज कर दी। अब अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को बताना पड़ेगा कि शराब नीति में बदलाव क्यों किए गए, 5% से 12% कमीशन क्यों की गई, 7% का किकबैक किसे मिला, और जो इतने करोड़ों का घोटाला है वो पैसे कहां खर्च हुए। 2 तारीख को ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के अंदर सम्मन करके बुलाया है। मुख्यमंत्री जी, आप जो मर्जी कहें, ईडी के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। और ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आज सुप्रीम कोर्ट ने दिन में जब मनीष सिसोदिया के को बेल रिजेक्ट करते हुए टिप्पणी की 338 करोड़ रुपए के बारे में, उसका सवाल का जवाब तो आपको देना होगा, क्योंकि इस सब शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और किंग पिन तो अरविंद केजरीवाल जी आप ही हैं। और हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं कि जब आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अरविंद केजरीवाल जी को ना निचली अदालत पे विश्वास था, ना हाई कोर्ट पे था। अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोलेंगे, पर बड़ा जन जन तक है। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जेल से तब तक नहीं आएगा बाहर जब तक उसके द्वारा लूटे गए एक पैसे का हिसाब ना हो जाए और उसमें उसकी सजा ना हो जाए। देश को और दिल्ली के लोगों को पता चल गया देश का सबसे बड़ा बेईमान लुटेरा कौन है, अरविंद केजरीवाल और उसके साथी मनीष सिसोदिया जैसे लोग। My colleagues Munish Pandey and Anmol Bali are joining us live this morning. I'll come across to you, Munish, first. Good morning to you. What is the case that the Enforcement Directorate has in terms of Arvind Kejriwal's alleged links at the moment to the Liquorgate case? We do know that the CBI has questioned him in the past. What is the ED likely to interrogate him about? Good morning, Paulmi. As far as Arvind Kejriwal is concerned, remember in the month of April this year, Arvind Kejriwal was questioned by the Central Bureau of Investigation. But the difference here is that then he was treated as a witness in this case. Now, as far as Enforcement Directorate is concerned, under Prevention of Money Laundering Act, there is no witness. A person who is questioned by the Enforcement Directorate, the person is treated as a suspect in the case, and that is what the ED is going to be, which means that Arvind Kejriwal
is under scanner of Enforcement Directorate. Now, why he has been called for questioning and what will happen on 2nd of November? There are three reasons for it, three grounds for it to summon Arvind Kejriwal. The first one is his phone call with one of the accused in the case, Dinesh Arora. Now, according to one of the charge sheets filed by the Enforcement Directorate, Arvind Kejriwal did speak to an accused in this case, Dinesh Arora, over a phone call. And this phone call was arranged by then communication in charge of Aam Aadmi Party, Vijay Nair, who is also one of the accused in the case. He was arrested by CBI, ED, and still he is in Tihar jail. That is ground number one. Second is Arvind Kejriwal met an MP of Andhra Pradesh, Magunta Reddy, and according to Enforcement Directorate, in that meeting, Arvind Kejriwal welcomed that member of parliament to do business in under the new excise policy brought in by the Aam Aadmi Party. And his son indeed did business under the new excise policy of Aam Aadmi Party. That is ground number two. The third is going to be extremely important. All may remember when Supreme Court was hearing the bail matter of Manish Sisodia, then Supreme Court had asked Enforcement Directorate that when Aam Aadmi Party is beneficiary of proceeds of crime, the ill-gotten money, then why Aam Aadmi Party is not made accused in the case? You have been given to understand is that there is a high possibility that Aam Aadmi Party will be made accused in the case. Arvind Kejriwal is national convener of Aam Aadmi Party. So, of course, there are going to be questions like why this money was used for Goa elections, whether he was aware of the fact that a scam is taking place under his nose, and these questions Arvind Kejriwal has to face. And remember, Paulimi, if Aam Aadmi Party is made accused in this case, then this will be for the first time in the history of India that a national party will be made accused in a corruption case. So trouble seems to be mounting for not only Arvind Kejriwal, but also for the Aam Aadmi Party. Right. Munish, thank you so much for joining us with all of those details. Munish Pandey, they're bringing us all the details of that case that the Enforcement Directorate has at the moment against Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. He, of course, will have to respond to those allegations when he appears before the agency on November 2nd.